Our today's class is for class 12th and subject is geology. The topic is today fossil. In other words, we can say it is a agnostus type of fossil. We have already discussed some fossils of Trilobita subclass. This agnostus is one of the fossil of subclass Trilobita. The kingdom of this agnostus is Animalia, phylum is Arthropoda, class is Crustacea, subclass is Itis Trilobita, and genus is Agnostus. So, the range or stratigraphical history, or we can say, is Cambrian, especially rocks of late Cambrian age, which starts from 506 to 492 billion years ago. When we see the morphological features of this agnostus fossil, you see the body size is very small and head shield, this is head shield, or we can say name it as cephalon. This head shield and cephalon have the similar form, means both are semicircular in outline and both have the same form and also the same size of this body. This is the body head part, cephalon part. This is the thorax or body part, and this is the tail or pygidium part of this agnostus shell. When you see the eyes are not seen, they are not prominent, and if we see the sutures, facial sutures, they are also not present in this head shield of agnostus shell. The glabella of this shell does not reach the interior border of the head, so the glabella is not also visible. Some lateral parts are visible, but the interior part is not visible. So when we talk of this thorax or body, small size body or thorax, which only composed of two segments. These two segments. These are the two segments of the body, and the axis of these body portion is white. Pallura of these body, these shell, we can say these palluras are grooved. One or two segmented body and the palluras are grooved. There are no doubt two segmented thorax, and also there is a tiny opening in the interior of this cephalon, or we can say between the head and the body there is a tiny opening. So the segmentation is also not seen. There is no segmentation in the lateral parts of pygidium. When we see the size of this shell is only 6 mm, that means 0.25 inches. Example of this type of fossil is agnostus pisciform. It is just like the shape of a pisci. In other words, that is why it shows pisciform, two parts of this P. So जब हम बात करेंगे इस एग्नोस्टस शेल की, हमने पहले पढ़े हैं दो शेल्स विच आर ऑफ द सब क्लास ट्राइलोबाइटा. मैंने पहले ही बताया है ट्राइलो मीन्स थ्री, लो मीन्स लोब्स, बिट मीन्स पीसेस, और हमने ट्राइलोबाइटा
ट्राइलोबाइटा के जो दो शेल्स पड़े हैं, फॉसिल्स पड़े हैं, उनमें हमने पैराग्लोसाइड और कैलीमीन की बात की है। दोनों में हेड शील्ड था और स्पाइन्स थे, एक लंबी सी थोरैक्स बॉडी थी और टेल था। एक में ट्रायंगुलर शेप का टेल था, दूसरे में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का टेल था। दोनों में सेगमेंटेशन जो थोरैक्स या बॉडी में थी, एक में 13 सेगमेंट्स थे, दूसरे में 16 से 20 सेगमेंट्स थे। लेकिन जब हम बात करेंगे एग्नोस्टिस की, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द कैलीमीन एंड द पैराग्लोसाइड. So calamine is why it is different, because there is no there is no presentation, or we can say prominence of these eyes or cheeks, or we can say sutures. Only a part. Head shield is a simple ball-like structure. Same is the tail. Both the shape of head and the ball, this tail looks like the balls, parts of a ball. So these two looks like similar in size and form. ये दोनों जो हेड और टेल है, दोनों एक ही शक्ल के हैं, एक ही साइज के हैं। जब हम बात करेंगे बॉडी की, थोरैक्स की सिर्फ 2 सेगमेंटेड की बॉडी है, जबकि हमने देखा है इससे पहले क्लासेस में, जो हमने कैलीमीन और पैराग्लोसाइड का क्लास लिया है, उसमें हमने मोर देन 10 और 13 सेगमेंटेड बॉडी देखी है और सेगमेंटेड टेल। यहाँ जो है नो सेगमेंटेशन, टेल में कोई सेगमेंटेशन, सिंपल सा एक फॉसिल है जिसमें बॉडी और टेल एक ही शक्ल का, एक ही साइज का है, बीच में 2 सेगमेंटेड बॉडी है, और जो आईज और स्यूचर्स है वो कंप्लीटली एब्सेंट है। किसी जब ग्लोबुला की बात हम करेंगे, ये कंप्लीटली जो थोरैक्स उसका है उसके साथ नहीं मिलता। इवन दो ये जो स्मॉल जो हेड जो है, इसके जो स्मॉल लोब्स दिखाई दे रहे हैं वो पोस्टीरियर एंगल्स तक नहीं जाता है। ये जो थोरैक्स 2 सेगमेंटेड है, ये दो छोटा होने के 2 सेगमेंटेड थोरैक्स बॉडी साथ होने के साथ साथ इसमें लंबे लंबे पेलुरॉइज है, एक्सीज है, और दोनों पेलुरॉइज जो है वो ग्रूव्ड है, जैसे हमने बाकी फॉसिल्स में भी देखा है। इवन दो आपने इसमें सेगमेंटेशन नहीं देखी है, लेकिन इसकी जो शक्ल वो हूबहू टेल की जो शक्ल हूबहू हेड से मिलती जुलती है। एक छोटा सा शेल है जो जिसकी लेंथ जो है 6 मिलीमीटर है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से 0.25 इंचेस है इसकी लेंथ। और इसकी एग्जाम्पल जो है एग्नोस्टस पिसिफॉर्म, जैसे आपने मटर का दाना देखा है, उस मटर के दाने के जो 2 हिस्से होते हैं उसी की तरह इस शल की शक्ल हूबहू मिलती जुलती है। ये सारी जो डिटेल है रिगार्डिंग दिस द important points which are related to this agnostus fossil. These points differentiate completely this agnostus shell from the other 2 subclass trilobita shells, कैलीमीन एंड पैराग्लोसाइड। ये 3 शेल इस ट्राइलोबाइटा के हमारे सिलेबस में जो थे, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है उनसे। बहुत सिंपल सा आसान सा क्लास, सिंपल सा टॉपिक है फॉसिल एग्नोस्टस। सो दिस वाज ऑल अबाउट regarding the morphological features range of this shell agnostus.